Okay, so गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एग्जामपुर आईएएस इंग्लिश मीडियम। आप सभी का हमारे परिवार एग्जामपुर में स्वागत है। सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस डिकोड फिलोसॉफिकल एसे। तो जल्दी जल्दी सेशन पे जुड़ जाए। मैंने कहा था कि एसे की जो स्टार्टिंग की सेशन होती है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। आज का एसे है ये परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू। अगर आज की एसे की बात करेंगे तो आज का ऐसे टॉपिक है, आज का जो ऐसे टॉपिक है दैट इज your perception of me your perception of me is a reflection of you, is a reflection of you, is a reflection of you. Okay, your perception of me is a reflection of you. My reaction to you is an awareness of me. My reaction to you is an awareness to me, is an awareness to me, is an awareness टू मी। ठीक है ना? ओके, जल्दी जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएं, सभी बच्चे जल्दी जल्दी सेशन के जुड़ जाएं। नितेश, गुड इवनिंग। नितेश, डू वन थिंग, काइंडली शेयर द सेशन ऑन द द्रोणा ग्रुप सो दैट द अदर स्टूडेंट कैन गेट आल्सो कनेक्टेड। नितेश, जल्दी से जल्दी जो है इस सेशन को शेयर कर दीजिए द्रोणा ग्रुप पे, ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएं। आई हैव टू स्टार्ट, दिस सीम्स टू बी वेरी कॉम्प्लिकेटेड essay. And I have already stated in the beginning that to decode an essay, it's a very critical job. Your perception of me is a reflection of you. If your perception of me is a reflection of you, my reaction to you is an awareness of me. Nitish, are you there in the class? Kindly share the session. Is everything is okay? Do confirm. Is everything is okay? आप लोग की कमेंट्स नहीं आ रही। Is everything is okay? Please do let me know so that we can resume our session. I'm not getting any feedback. आप लोग के फीडबैक नहीं आ रहे हैं। Just I'm repeating whether everything is okay. Shall I continue with the session? Okay. जल्दी जल्दी सभी बच्चे को, नितेश जल्दी जल्दी सेशन को शेयर कर दिए दोनों ग्रुप में। Once the session is started and after repeatedly stating for continuously for 20 days, still you people are failed to inculcate the good values. This is not the attribute of a good UPSC aspirants. UPSC aspirant का जो रहता है ना, they are highly disciplined one. You know that in the beginning we decode the essay, we try to understand what is to be written in the essay, and after that we start the session. And if you, आप लोग जो है, you always जो है, आप लोग हमेशा जो है, after repeatedly asking for 7 days, still the students fail to join a certain time. ये गलत चीज है। If it is wrong, do not expect from me that I'm going to accept it. बताइए, जल्दी जल्दी सभी लोग कनेक्ट हो जाएं। चलिए, let it be. Okay. तो यहां क्या, योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू। योर, सबसे पहले अगर देखिएगा इस एसे को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस टू मी, है ना। माई रिफ्लेक्शन, जब योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू,
इसको सोचिए क्या लिखा है, योर परसेप्शन ऑफ मी, हाउ यू थिंक ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, है ना। तो इसका मतलब क्या है, what you are going to think about me, it depends on your own thoughts that are being developed through different activities, ठीक है ना। ये आपका पहला हुआ, ओके। तो यहां लिखा है योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, माई रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस टू मी। तो यहां पे देखिए व्हाट यू आर गोइंग टू थिंक अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये आप पे निर्भर करता है ना। अगर जिस तरीके से आपकी परवरिश हुई है, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, उसी सोसाइटी के अनुरूप जो है आप मुझे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं खुद की बात बारे में, माई रिएक्शन टू यू is an awareness to be, but when I talk about myself, what will be my reaction, it all depends upon my awareness. So when I talk about myself regarding the reaction, but when I talk about myself, my reflection, when I talk about myself, my reflection to you मतलब how I am going to revert back, किस प्रकार से मैं आपको जवाब दूंगा, revert back, it all depends on my awareness, ठीक है ना, all depends upon my awareness। ये आपका ऐसे का डिकोडिंग हुआ। तो प्लीज रीड द लाइन वंस, ओके। नितेश जी, वेयर आर द अदर स्टूडेंट्स, सभी बच्चे कहाँ हैं, लॉट्स ऑफ सूरभि, निकी, मृदुल, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स आर मिसिंग टुडे, ठीक है। तो चलिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखिए योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, ध्यान से सुनिए, योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू, my reaction to you is an awareness to me, ठीक है। तो लिखा हूं योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन, अगर आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो आपके थॉट के ऊपर निर्भर करता है, और वो थॉट किस प्रकार से डेवलप होता है, थॉट जो है डिफरेंट जो लाइफ के एक्टिविटीज होते हैं उनके अनुसार जो है थॉट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। What you are going to think about me, it depends on your own thought, they are being developed through different activities. And when you talk about my reaction to, मेरा रिएक्शन किस प्रकार से होगा, मेरा रिएक्शन जो है मेरी अवेयरनेस के ऊपर निर्भर करेगा, ठीक है ना, मेरी जागरूकता के ऊपर निर्भर करेगा। बट व्हेन यू टॉक अबाउट माई सेल्फ, माई रिफ्लेक्शन टू यू, हाउ आई एम गोइंग टू रिवर्ट बैक, इट ऑल डिपेंड्स ऑन माई अवेयरनेस, ठीक है। बताइए, इज इट ओके? नितेश, समझ आया आपको अभी? देखिए कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा वो उसके सोच के ऊपर निर्भर करता है, उसका सोच किस प्रकार होगा, उसका सोच जिस सोसाइटी में रहता है उस सोसाइटी के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है ना। लेकिन मेरा सोच क्या होगा, मेरा सोच मेरी अवेयरनेस के ऊपर, मेरी रिप्लाई क्या होगी, मतलब हाउ आई एम गोइंग टू रिवर्ट इट बैक, वो मेरी अवेयरनेस के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। बताइए, इज इट क्लियर नाउ? देखिए, it depends upon the attitude of the student. You might be knowing that Sanjeev sir has started PSIR optional
by himself so that the student will get benefit of political science. ठीक है ना, political science and international relation. But in the beginning most of the student asked him to start the session so that they can attend the session live. But after few days, when it was being started, we have to watch the session. It was around 18 in number. But after few days, the student drastically declined. Declined in the sense they have from 18 it was like 4 to 5. So what about his confidence? He decided not to take the classes. ठीक है, the student जो होता है, they will readily accept to pay the fees in the market. ठीक है ना, and after paying the fees, since pocket से पैसा लगा है, so what they will do, they will try to attend the session live. किसी पर live होगा, they auto charges देंगे and they will go to the coaching, attend the class. But when something is being provided freely ना, आपको पता है उसका वैल्यू नहीं हो पाता है. So it's not the attitude of UPSC aspirant. क्योंकि उन लोग जो है खुद से स्टार्टिंग से ही क्या होता है कि दे आर अनेबल टू जज कि व्हाट थिंग इज गोइंग टू बेनिफिट देम. तो दिस इज नॉट द एटीट्यूड ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट. किसी प्रकार से जो है आपको बुरा लगे अच्छा लगे, इट इज इमैटेरियल टू मी. मुझे फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है, तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स का जो गुण होता है ना कि अगर इफ एसी इज बीइंग स्टार्टेड, इफ पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल इज बीइंग स्टार्टेड, इफ सम न्यू इनिशिएटिव्स आर बीइंग स्टार्टेड फॉर our own students and they are so much adamant in nature that they will try to attend only the recorded lecture after being properly instigated by the faculties itself. They try to attend the lecture live if you want to continue this channel. But still after repeatedly asking for the same thing, still the result is no. हम तो ऐसे ही हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, है कि नहीं? तो ऐसे लोगों को मैं क्या कहूं, इफ दे आर थिंकिंग कि यूपीएससी इज लाइक जस्ट लाइक ए कप ऑफ टी, तो भैया कप ऑफ पॉइजन से भी ज्यादा टफ है. कप ऑफ पॉइजन से भी जो है इट इज टफर देन दैट. ओके, इज इट क्लियर? सो योर परसेप्शन ऑफ मी इज a reflection of you. My reaction to you is an awareness to me. What you are going to think about me, it's all depends upon your thought. It all depends upon you how you are being brought up. But my reaction to you, how I'm going to react to you, it's all depend upon my awareness. ठीक है, चलिए. So now we'll start the essay writing. Your perception of me is a reflection of you. My reaction to you is an awareness to me. ठीक है, clear है? So let us start the answer writing. मैं कुछ गलत कह रहा हूं? इनविंसिबल, गणित, नितेश कुमार जी, मैंने जो कहा है कुछ गलत कहा है अपने बच्चों के बारे में? कल से आई डोंट थिंक कि, चलो कल एक लास्ट एसे राइटिंग क्लासेस ले लेता हूं एज आई प्रॉमिस्ड. मैंने जो है आशी तिवारी से लाइव लेते हैं. कमेंट्स बॉक्स ऑफ करके प्लीज सर कैरी ऑन दिस टॉपिक. नाउ कम टॉपिक प्लीज. आशी तिवारी जो है लाइव कमेंट्स ऑफ करके प्लीज. देखिए, when somebody is attending the classes, प्लीज एक बार बिगनिंग में जो है आप लोग जो है हाई कर दीजिए. आफ्टर दैट क्लासेस विल बी स्टार्टेड. एंड यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 6 वॉचिंग नाउ है. पहले कितने थी? 2-3. सो मैं फूल तो नहीं हूं ना? आई एम नॉट ए फूल. ओके, चलिए. सो योर परसेप्शन ऑफ मी, I thought of taking more essay classes, but I'm not getting the proper motivation. So today and tomorrow, my last essay classes will be there. Again, I will continue with the science and tech, and internal security is being completed. ठीक है, चलिए. Because मैंने essay काफी ज्यादा करवा दिया है, more than enough. I think I've taken more than 15 classes regarding essay. इतना जो है कोई क्लासेस नहीं लेते. Nobody will take. But it was my own opinion that I could have continued 20 more classes. मतलब 6 to 7 मोर क्लासेस, सो दैट आप लोग का 20 ऐसे राइटिंग हो जाए तो उसके बाद आपको किसी भी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने नोट्स बनाए हैं. लेकिन ठीक है, कल ऐसे की क्लासेस मेरी लास्ट होगी. आफ्टर दैट आई विल टेकिंग शॉर्ट सेशन व्हाट एवर इट इज, क्योंकि बच्चों लोगों के बारे में सोचना भी थोड़ा सा ये है. चलिए, ठीक है. योर परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ यू. कोई भी चीज आप जब कोई मार्केट में जाते हैं व्हेन यू पे फॉर समथिंग ना, सपोज 10 रुपए किलो आज आलू है, व्हेन यू पे 20 रुपीज, इन रिटर्न यू आर गेटिंग 2 kgs of aloo. This is how the things should be. Always जो होता है there should be reciprocity, give and take जो है वो हमेशा रहना चाहिए. And यहाँ पे क्या है, we are just providing the steps,
बट इन रिटर्न वी वांट द सोर्सेज ऑफ मोटिवेशन, सो दैट आप लोग जब आएंगे, अभी जब बच्चे आते हैं तो एक इंटरेक्शन होता है, खुद से अच्छा लगता है कि चलो आवर स्टूडेंट्स आर वाचिंग द लेक्चर, हम लोग उसको पढ़ाते हैं, बट नोबडी, अगर बच्चे नहीं आएंगे तो किस प्रकार से मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं किससे बात करूंगा, किसको देख के पढ़ाऊंगा? ठीक है, डू नॉट गाइड मी आसिफ तिवारी, डू नॉट ट्राई टू गाइड मी। ठीक है, don't try to guide me. Whatever I'm feeling, I'm stating the same thing. It's all about the students. If students are not attending the classes on live matter, how can you expect that how the faculty will develop the motivation to carry on the classes? And if I'm stating the same thing, you're asking me to continue the classes? ऐसा नहीं होता है ना, ताली बजने के लिए भी दोनों हाथ को आना पड़ता है साथ में। नुकसान आप ही लोग को होता है, बाय द एंड ऑफ द डे नुकसान आप ही लोग को होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो योर परसेप्शन ऑफ मी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू। यूपीएससी बहुत टफ एग्जाम है, यहां पे जो है अच्छे अच्छे लोग जो है नहीं निकाल पाते हैं, मेहनत करना पड़ेगा तब जाके एग्जाम निकलेगा। योर परसेप्शन about me, your perception about me is a reflection of you, is a reflection of, sorry, a perception about me is a reflection of you, is a reflection of you. My reaction to you is an awareness of me. My reaction to you, my reaction to you is an awareness of me, is an awareness of me। ठीक है ना, इसका मतलब समझ चुके हैं ना आप लोग? लेट मी रिपीट, मेरे बारे में परसेप्शन जो होगा, ठीक है ना, मेरे बारे में नो tomorrow will be my last classes regarding essay, after that I will continue with other sessions once decided। मैंने भी स्टार्टिंग में कहा था 10 ऐसे, लेकिन अभी आप लोगों के लिए 12 ऐसे ले चुका हूं, सो माय कमिटमेंट इज ओवर। चलिए ठीक है, तो ये परसेप्शन ऑफ मी इज ए रिफ्लेक्शन टू यू, माय रिएक्शन टू यू इज एन अवेयरनेस ऑफ मी। व्हाट डज इट मीन? योर परसेप्शन अबाउट, आप किस प्रकार से मेरे बारे में सोचेंगे, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर थॉट, एंड योर थॉट जो है हाउ इट इज बीइंग डेवलप, किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, आपकी अपब्रिंगनेस किस प्रकार से हुई है, किस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना, लेकिन अगर वही देखेंगे माय रिएक्शन टू यू, मैं किस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, इज एन अवेयरनेस व्हाट मी। चलिए एक हम लोग जो है अगर एसे राइटिंग की बात करें तो वी कैन स्टार्ट अवर एसे राइटिंग विद द हेल्प ऑफ एनेक्डोट। एनेक्डोट मतलब होता है, एनेक्डोट का मतलब होता है यू कैन स्टार्ट एसे राइटिंग विद सम स्टोरी, किस स्टोरी से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आकाश जो है, आकाश एक क्लास 10th स्टूडेंट, आकाश ए क्लास 10th student was very much fond of online gaming. One day he was playing online game with his friend. One day he was playing online game with his friend, ठीक है, with his friend, but suddenly there was interruption, but suddenly there was a network issue, there was a network issue,
and his game was completely disrupted, and his game was and his game was completely disrupted, and his game was completely disrupted. ठीक है, गेम जो है डिस्टर्ब हो गया. यस, पबजी लाइट. ठीक है, मैंने जो कहा है देखिए मैंने जो कहा है, डू नॉट टेक द वर्ड इन द नेगेटिव सेंस, ट्राई टू टेक द वर्ड्स इन द पॉजिटिव टेंस. इट्स ऑल फॉर यू. जो भी मैं कह रहा हूँ इट्स ऑल फॉर यूज, आप ही के लिए कह रहा हूँ. ठीक है ना, अगर आप एक दिन क्लासेस करते हैं, 9 दिन क्लासेस नहीं करते हैं, यूटिलिटी नहीं होता है. आप अगर रेगुलर बेसिस किसी भी चैनल का क्लासेस अटेंड करते हैं ना, किसी का भी, वो आपका डेफिनेटली वो सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता है, आपको कोचिंग करने की जरूरत नहीं होती है. ठीक है, तो आकाश पब क्या है, पब लाइट. अच्छा, क्या नाम है, पबजी लाइट. अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ पबजी लाइट लिख सकते हैं. आकाश एक क्लास 10 स्टूडेंट वाज वेरी मच फाउंड ऑफ ऑनलाइन गेमिंग. वन डे ही वाज प्लेइंग ऑनलाइन गेम. ऑनलाइन गेम का नाम लिख सकते हैं आप लोग, पबजी लाइट. ऑनलाइन गेम पबजी लाइट, पबजी लाइट. ठीक है, पबजी लाइट with his friend, but suddenly there was a network issue and his game was completely disrupted. He angrily called his internet representative and scolded him, and scolded him. How dare he? Scolded him. How dare you disconnect my internet? Disconnect my internet. Stay in limit. Otherwise next time I will change my internet. I will change my internet. ठीक है ना. Representative in a very calm way, representative calmly replied, sir, let me check, and after checking, he ensured that internet connection was proper. Internet connection was proper, and there was some network issue. Proper, and there was some network issue. कुछ network issue था. There was some network issue. ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग, यहाँ तक लिख लीजिए. ठीक है, कर ओके, नॉट एन इशू. आशीष जी, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा है. आकाश a class 10th student was very much fond of online gaming. One day he was playing online game light with his friend, but suddenly there was a network issue and his game was completely disrupted. He angrily called his internet representative and scolded him. How dare you disconnect my internet? Stay in limit, otherwise I'm going to change internet plan. और ठीक है, representative calmly replied, sir, let me check, and after checking he ensured that internet connection was proper and there was some network issue. Now we will see from this quote how we can correlate with the given statement your perception about me is a reflection of you. So jaldi se note down kijiye, and once it is noted, please do let me know. Once it is noted, please do let me know. जल्दी से नोट कीजिए आप लोग.
ठीक है, नोटेड। चलिए, सो अब यहां पे देखने को मिलेंगे आकाश परसेप्शन टुवर्ड द रिप्रेजेंटेटिव रिफ्लेक्ट्स हिज ओन कैरेक्टर। ठीक है ना, आकाश का जो परसेप्शन टुवर्ड्स दैट रिप्रेजेंटेटिव था इज द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज कैरेक्टर। ठीक है, सो आकाश परसेप्शन टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव आकाश परसेप्शन टुवर्ड्स द रिप्रेजेंटेटिव इज द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज कैरेक्टर। आकाश का जो है जो परसेप्शन था टुवर्ड, फोन करके गाली देना शुरू कर दिया, व्हाट डज इट रिफ्लेक्ट? इट रिफ्लेक्ट्स ओन कैरेक्टर, है ना। चलिए, आकाश परसेप्शन टुवर्ड द रिप्रेजेंटेटिव इज द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज कैरेक्टर, is the reflection of his character। ठीक है, but Akash perception toward the reflection of his character, but reaction of the representative, ध्यान से सुनिएगा, but reaction of the representatives towards Akash, but reaction of the representative, but reaction of the representative towards Akash reflects the awareness, ध्यान से सुनिएगा, Akash perception toward the representative is the reflection of his character, but reaction of the representative towards Akash is the awareness of the value, is the awareness of the value that is being imparted by the organization, है ना, is the awareness towards, but the reaction of representative to Akash is the awareness of the value that is being imparted to the representative, that is being imparted by the company, that is being imparted by the company, by the organization, by the समझ पा रहे हैं आप लोग इस चीज को? नितेश, आशी, इनविंसिबल, इस चीज को आप लोग समझ पा रहे हैं? प्रियंका, आर यू एबल टू ग्रैस्प इट कि मैंने क्या लिखा है? देखिए, ध्यान से पढ़िए, मैंने लिखा है यहाँ पे कि आकाश परसेप्शन टुवर्ड द रिप्रेजेंटेटिव, आकाश का जो परसेप्शन द टुवर्ड द रिप्रेजेंटेटिव इज द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज ओन कैरेक्टर। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट द रिप्रेजेंटेटिव, हाउ, मतलब उसने किस प्रकार से रिएक्शन दिया? द रिएक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव टुवर्ड द आकाश इज द अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के वैल्यू, उसके अनुसार कंपनी ये थोड़ा ना बताती है गुस्सा करना, ठीक है ना। तो अब आप ये लिख सकते हैं, आकाश डेवलप दिस कैरेक्टर टुवर्ड द सराउंडिंग। आकाश जो है, आकाश हैज डेवलप्ड, यहां लिख सकते हैं, आकाश हैज डेवलप्ड हिज कैरेक्टर, developed this Akash has developed this character from the surrounding, from the surrounding, and he is not aware, that behaving in such a rough fashion should not be done, whereas but on the contrary side,
on the contrary side, representative is being aware of his character. क्लियर नहीं दिख रहा? अब मैं रीड भी, कोई बात नहीं प्रियंका जी, आप लिख सकते हैं, उसको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ भी रहा हूं, ठीक है ना, चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूं। आकाश परसेप्शन टुवर्ड द रिप्रेजेंटेटिव इज द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज कैरेक्टर, बट द रिफ्लेक्शन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव टुवर्ड्स आकाश इज द अवेयरनेस ऑफ द वैल्यू दैट इज बीइंग इम्पार्टेड बाय ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। ओके Akash has developed this character from the surrounding, from the surrounding, and he is not aware, and he is properly not aware of this social, not aware how to behave, not aware how to behave, ठीक है। ऑन द कंट्रारी साइड, ऑन द, अभी तो ठीक है, नाउ इट्स ओके प्रियंका जी, नाउ इट्स ओके, मैं थोड़ा इंक्रीज कर दिया। ऑन द कंट्रारी साइड, ऑन द, मैसेज करके बताइए मुझे, मैसेज डिलीट मत किया कीजिए। ऑन द कंट्रारी साइड, जहां मैं गलत हूंगा खुद को सुधारूंगा। ऑन द कंट्रारी साइड, representative is well aware of the values, training that is being imparted by the company, imparted by the company. आकाश जो है, आकाश जो है was lacking emotional intelligence, उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था, बट द कंपनी हैज इनकलकेटेड इमोशनल इंटेलिजेंस into all the representative. Akash was lacking, Akash behavior was due to lack of emotional intelligence. On the other hand, representative was being trained how to maintain emotional intelligence, or representative was being trained and inculcated emotional intelligence to deal with this type of customer, ठीक है ना। On the other hand, representatives, ठीक है ना, representatives are being trained and inculcated emotional intelligence to deal with such type of customer, such type of customer, ठीक है। Can you note it down? ठीक है, चलिए। So what we have written, Akash has developed this character from the surrounding and he is properly not aware how to behave. On the contrary side,
representative is well aware of the values training that is being imparted by the company. Akash's behavior was due to lack of emotional intelligence. On the other hand, representative was being trained and inculcated emotional intelligence to deal with such type of customers. ठीक है, अभी राइटिंग कैसी है प्रियंका? प्रियंका ने कमेंट किया था कि आशी ने कमेंट किया था मेरी राइटिंग को लेकर, जल्दी से बताइए। ठीक है, चलिए, ओके। चलो, गुड। कैन आई चेंज द स्लाइड? अच्छी है सर राइटिंग, थैंक यू। चलो, अब एक चीज बताइए, व्हेन यू टॉक अबाउट द चाइल्ड, जैसे मैं अभी एक चीज, मतलब बहुत अच्छा चीज मैंने नोटिस किया हूं, उस चीज को ऑब्जर्व करने की कोशिश किया। जैसे बच्चे जो होते हैं, जैसे मेरा भैया है, तो भैया का एक लड़का है, उसकी पहली मतलब फर्स्ट बर्थडे था, तो मैं गया था। कंटिन्यूसली मुझे 4 दिन लगे उससे दोस्ती करने में। 4 दिन के बाद उससे मेरी दोस्ती हुई, और दोस्ती के बाद, ठीक है ना, दोस्ती के बाद जो है फिर मैं उसको एक दिन बाहर घुमाने लेके, मतलब 4 दिन के बाद। तो मैं सोचा कि बच्चे जो होते हैं डायरेक्टली किसी की गोदी में नहीं जाते, कारण क्या है? इसका एक सोशल फैक्टर है कि देखिएगा, अगर बच्चे जो हैं अजनबी को देख के भागते हैं, चिल्लाते हैं गोदी लेने से, भगवान ने ऐसा नेचर दिया ताकि उनका कोई किडनैप ना कर ले। 3-4 दिन के बाद उन्हें जब लगता है कि पापा से मिलते हैं, ये पापा के कुछ लगते हैं, चाचा लगते हैं, चाहे कुछ कुछ तो रखते हैं, घर के ही मेंबर है, तब आपके गोदी में आता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब एक बच्चे की जन्म होती है, व्हेन ए किड इज बोर्न, ही इज नॉट अवेयर अबाउट द वर्ल्ड, he is not aware regarding his parents relation, he is not aware regarding who is father's brother, father's sister, है ना? But the character that is being imparted to the child is basically at that stage is the reflection of the parent character, है कि नहीं? है कि नहीं? When a child is born, राइटिंग छोटी को टोक दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, मेरी आदत खराब हो गई है। When a child is born, he is not aware about the world, about the world, ठीक है ना, not about, when a child is born he is not aware about the world, he is not aware, he is not aware regarding parents relation, so the character of the child that is being imparted, so the character of the child is the reflection of the parent character, is the reflection of their parents character, ठीक है, parents character. Is it okay? अगर चलो ठीक है, मैंने क्या लिखा, when a child is born he is not aware about the world, even he is not aware, he or she, मतलब जेंडर इक्वलिटी रखना, ही और सी लिखिएगा। मैं हमेशा एग्जामिनेशन ये भी सारे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पे आप ही और सी लिख दीजिए, यहाँ पे आपने नाम नहीं लिखा है तो यहाँ पे आप जो है ही और सी लिख दीजिएगा, ठीक है ना। इवन व्हेन ही और सी इज नॉट अवेयर रिगार्डिंग पेरेंट्स रिलेटिव रिलेशन, सो द कैरेक्टर ऑफ द चाइल्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द पेरेंट्स कैरेक्टर।
ठीक है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है, चलिए, ओके। सो इन एंशियंट ग्रीस, अगर एंशियंट ग्रीस की बात करेंगे, इन एंशियंट ग्रीस जो सॉक्रेट्स वाज एक्यूज्ड ऑफ, यहाँ देखिए, इन एंशियंट ग्रीस, अब पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। इन एंशियंट ग्रीस, इन एंशियंट ग्रीस Socrates was accused of leading the young astray, leading the young astray, and because of this he was punished, and because of this he was sentenced to death, though Socrates had the opportunity to flee, had the opportunity to flee, but he rejected this opportunity, and accepted the punishment, and accepted the cup of poison, and accepted the cup of poison, ठीक है, accepted the cup of poison. The perception of the justice system, क्या हो गया प्रियंका जी? The perception of justice system, the perception of justice system in Athens, and how Socrates was sentenced to death reflects parochial attitude of the parochial justice system of the state, and Socrates' acceptance and Socrates' reflection, acceptance of cup of poison reflects, and Socrates' reflection, acceptance of cup of poison indicated his awareness, his awareness towards his estate, towards his state. He accepted death so that youth will have belief in
justice system and otherwise anarchy will spread, otherwise anarchy will spread. ठीक है, लेट मी रीड इट. अभी तो राइटिंग बड़ी है मेरी ना नितेश जी, नाउ इट इज क्वाइट लिजिबल. तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है. अगर हम ग्रीस की बात करें तो ग्रीस में जो है तो सॉक्रेट्स जो थे, तो सॉक्रेट्स लोगों से मिलके जो है ना रैशनल थिंकिंग की बात करते थे. व्हेनेवर समथिंग इज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द स्टेट, वो कहते थे थिंक ऑफ इट वेदर यू आर गेटिंग बेनिफिटेड और नॉट. तो ही वाज इंजेक्टिंग रैशनल थिंकिंग. तो वहां के जो स्टेट जो है उनको अच्छा नहीं लगा. तो उन्होंने आरोप क्या लगाया, ही वाज लीडिंग द यंगस्टर, मतलब यंगस्टर को जो है वो गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, एंड सेंटेंस हिम टू डेथ. ठीक है ना. तो सॉक्रेट्स के पास एक ऑफर था, प्लेटो थे उसके शिष्य, उसके पास ऑफर था कि वो जेल से भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने भागा नहीं. उन्होंने रेडियली जो है कप ऑफ पॉइजन का एक्सेप्ट किया, ताकि जो है वहां के यंगस्टर को जुडिशियल सिस्टम पे भरोसा रहे और स्टेट में एनार्की ना फैले. तो ठीक है ना, उसको इस ऐसे हमने को रिलेट किया है. तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप लोग, तभी बच्चे जल्दी जल्दी नोट डाउन करें. And once it is noted, please do let me know. प्रियंका, अभी मेरी राइटिंग बड़ी है ना थोड़ी सी. प्रियंका ही मेरी राइटिंग को सुधारेगी. यस, वेरी गुड आसिफ, वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस्ड. चलो, नहीं तो राइटिंग इज टू गुड सर. नहीं, आई हैव गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी. मेरे को एक नहीं, सभी लोगों ने कहा है कि राइटिंग सुधारना. प्रियंका जी कम से कम कोशिश कीजिए कि 7 दिन 6 दिन मेरी रेगुलर क्लासेस अटेंड कर लीजिए, ठीक है, ताकि मेरी राइटिंग सुधर जाए. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं आपको देता हूं. चलो, नोटेड. सो वेरी गुड. चलिए, यस, चलिए. देखिए, लिखना बहुत जरूरी है. एटलीस्ट आप लोगों को ना एवरी डे यू हैव टू राइट मिनिमम 3000 वर्ड. 3000 वर्ड आपको लिखना ही लिखना है, किसी तरीका से आपको लिखना है. ठीक है, चलिए. नाउ वी विल स्टार्ट. सिमिलरली ब्रिटिश की बात करें, ब्रिटिश परसेप्शन टुवर्ड्स द इंडियन वाज दैट इंडियंस वर अनेबल टू रूल देमसेल्फ एंड दे वर लिटिल बिट बार्बरिक. आप लिख सकते हैं सिमिलरली ब्रिटिश परसेप्शन टुवर्ड्स इंडिया, सिमिलरली ब्रिटिश perception towards India was that Indians were unable to rule themselves, that Indians were unable to rule themselves. ठीक है ना, इंडियंस were unable to rule themselves. That's why all the administration was being controlled by British. That's why for the betterment of Indians, all the administration is being
controlled by British, as being controlled by British, but the great leaders shows the reaction, but the great leaders चलिए okay, but the great leaders like Raja Ram Mohan Roy, ठीक है ना, राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक, but the great leaders like Raja Ram Mohan Roy, Bal Gangadhar Tilak, etc. reacted to this by explaining the masses, about our rich heritage culture, how our nation was being named as सोने की चिड़िया, है ना. चलो, okay, about our rich heritage culture. Again, it was British perception. That Indians can be controlled. Controlled and administered again. It was British perception that Indians can be controlled and administered only with hard power, only with hard power, but it was Gandhi's reaction. But Gandhiji reacted to this by his belief that tolerance and non-violence is the only tool that can bring independence, and we achieved independence because of this only, and we achieved independence because of this reaction only, ठीक है. ठीक है, चलिए. सो व्हाट आई हैव रिटन, कितना अच्छा चीज मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. देखिए, हम जब एसे लिखते हैं ना, ऑलवेज just listen to my word carefully. Whenever you are writing essay, never try to get deviated from the topic. Apart from that, in the topic certain keywords are being mentioned. You have to inculcate those keywords in the essay, like perception, reaction, reflection. These are the keywords. ऐसे keywords को मिला के आपको essay लिखने की कोशिश करनी है. तो देखिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे. ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश ये सोचते थे कि इंडियंस जो है they cannot rule themselves. लेकिन फिर आपको बात राजा राम मोहन रॉय, बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि how we are having the rich heritage culture. Masses को जो है they also gain the confidence that we are capable of ruling ourselves. Apart from that, ब्रिटिश को लगता था कि हम जो है इंडियंस को चाबुक के तौर पे ही कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन गांधी जी ने कहा कि हम तो आजादी लेंगे, लेकिन टॉलरेंस एंड
नॉन वायलेंस से लेंगे। ये गांधी जी का रिएक्शन था जो कि हम लोगों ने अचीव किया। ठीक है, चलिए अभी बात हो गया बहुत, अब लिखा, अब आप लोगों को लिखना है, जल्दी से लिखिए आप लोग। Similarly, British perception towards India was that Indians were unable to rule themselves. That's why for the betterment of Indians, all the administration is being controlled by British. But the great leaders like Raja Ram Mohan Rai, Bal Gangadhar Tilak, etc. reacted to this by explaining the masses about our rich heritage culture. Again, it was British perception that Indians can be controlled and administered only with hard power. But the Gandhiji reacted to this by his belief that tolerance and non-violence is the only tool that can bring independence and achieve independence because of this reaction only. ठीक है, because of, ओके, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग। Once it is noted, please do let me know. यस गांधी जी, चलिए जल्दी से नोट करके बताइए। नोटेड। आपका पूरा नाम क्या है? इनविंसिबल इनक्रेडिबल पावर द सन। अच्छा नाम है, लेकिन नाम क्या है आपका? ओके, चलिए। सो अब एक चीज आप देखने की कोशिश कीजिएगा, इवन perception and reflection attitude is being noted in recent world also. When we talk about mob lynching, जब mob lynching किया जाता है, and when media person approach this family, they are not asking revenge उन लोग नहीं मांगते, rather they are asking the judicial system should be active. That means what? अगर mob lynching के बारे में बात करें तो mob lyncher जो है they killed the community, but when you talk about the victims, तो victims क्या कहते हैं? They still are having faith in the judicial system. वो लोग रिवेंज नहीं मांगते हैं, उनको सजा देना चाहिए, गर्दन के बदले गर्दन नहीं मांगते हैं। ठीक है, इज इट ओके? ठीक है, ठीक है, चलिए ओके। अच्छा, अविनाश तिवारी, आप डांटना नहीं सर। कितना नेगेटिव एटीट्यूड आप लोग के अंदर में भर चुका है मेरे कारण, डांटना नहीं। हाँ, ऐसा नहीं है। देखो क्या होता है ना, जस्ट थिंक ऑफ यू वेन एवर यू आर टेकिंग द क्लासेस। जब मैं क्लासेस लेता हूँ, आई एम नॉट आस्किंग टू बी मोर इन नंबर, लेकिन सेशन शुड बी इंटरेक्टिव। मैं किसको पढ़ाऊं? होता है ना कि क्लासेस लेना है, 2 घंटे की क्लासेस है, इफ 8 to 10 पीपल्स दे आर वॉचिंग द सेक्शन लाइव, तो क्या होता है, हंसी मजाक में क्लासेस निकल जाता है, मुझे भी बोरियत नहीं होती। मैं आई कैन टेक द क्लासेस ऑफ 4 to 5 hours ऑल्सो, बट इफ द स्टूडेंट्स जो है, इफ द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रेजेंट, इट सीम्स टू बी डिफिकल्ट टू टेक द क्लासेस एट दैट टाइम। थोड़ा सा तकलीफ होता है। सो यू नो माई नेचर, ठीक है ना, गुस्सा होने की बात नहीं है, डांटना नहीं। यूपीएससी एस्पिरेंट को एनसीईआरटी की क्लासेस कब से करनी चाहिए? जब से आप एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं, तो एनसीईआरटी जब खत्म करते हैं, खत्म करने के बाद चैप्टर के एंड में एक्सरसाइज क्वेश्चन रहता है, उसी दिन से आप एनसीईआरटी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, चलिए। सो इवन परसेप्शन रिफ्लेक्शन इज विजिबल इन द प्रेजेंट वर्ल्ड टू, इवन perception reflection is present in the is also visible in the present world, is also visible in the present world, ठीक है ना, in the present world. Mob lynching witnessed in the recent past.
मॉब लिंचिंग जो होता है, मॉब लिंचिंग is being witnessed in the recent past, in the recent past, ठीक है। mob lynching is being but we witness a unique trend, but we witness a unique trend in mob lynching, when media person, when approached by the media person, the victim's family, when approached by media person, and approached by media persons, when approached by media persons, victim's family want justice for themselves, they do not want any type of revenge. They did not want any type of revenge, किसी भी प्रकार के रिवेंज नहीं लेना है। सो द परसेप्शन ऑफ द मॉब लिंचर, so it reflects the perception of lyncher, how they can kill someone, on the other hand, जो victim's family, they are having trust on the other hand, the reaction of the victim family reflects on the other hand, reaction, देखिए शब्द लिखना है हमें ना, reaction of the victim's family reflects still they have full trust over the judicial system, ठीक है, ओके। चलिए, तो हमने क्या लिखा है, इवन परसेप्शन रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो विजिबल इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, मॉब लिंचिंग इज being witnessed in the recent past, but we witness a unique trend in mob lynching. When approached by media person, victim's family want justice for themselves. They didn't want any type of revenge. So its reflection, the perception of lyncher. Just a moment. So this reflects the perception of lyncher, how they can kill someone. On the other hand, reaction of the victim's family reflects still they have full thrust over the judicial system. ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए आप लोग।
ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करके मुझे बताइए, एशिया में एंड करना है, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए ठीक है, at the societal level it is being noticed that at the societal level, at the societal level it is being noticed, it is being noticed that there is a lack of communal harmony, there is a lack of communal harmony, there is a lack of communal harmony, there is a lack of communal harmony. One society sees other society, one society or one community look at the other community full of apprehension and distrust. One community looks at the other community with apprehension and distrust, ठीक है ना। When during the time Muslim League, एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं, मुस्लिम लीग they decided that Hindu Muslim coexistence is not possible. मुस्लिम लीग decided that मुस्लिम लीग जो था, मुस्लिम लीग during the time of independence, मुस्लिम लीग during the time of independence decided that during the time of independence decided that Hindu Muslim existence, Hindu Muslim existence, coexistence is not possible. Coexistence is not possible. This is the perception of Muslim League. This was the perception of Muslim League. This was the perception of Muslim League. This was the perception of Muslim League. ठीक है ना, ये मुस्लिम लीग का मुस्लिम लीग. But on the contrary side, side, Indian Muslim decided to stay in India. But on the contrary side, Indian Muslims decided to stay in India. It is the reflection. It reflects their reaction and awareness about Indian culture, ठीक है.
लेट मी रीड इट, मैं रीड कर देता हूं आप लोग के लिए, डोंट वरी, बी हैप्पी. At the societal level, it is being noticed that there is a lack of communal harmony. One community looks at the other community with apprehension and distrust. भरोसा नहीं है. एक कम्युनिटी जो है दूसरे कम्युनिटी को शक के निगाह से देखती है और एकदम भरोसा नहीं करती. एंड डिस्ट्रस्ट. ठीक है. मुस्लिम लीग during the time of independence decided that Hindu-Muslim coexistence is not possible. This was the perception of Muslim League. But on the contrary side, Indian Muslim decided to stay in India. It reflects their reaction and awareness about Indian culture. ठीक है? Clear? जल्दी से नोट डाउन कीजिए. ठीक है, चलिए. Even we can talk about the geopolitical level. Even we can talk about geopolitical level. Even we can talk about geopolitical level. Geopolitical level. Ambassadors from USA, just remember the name. Former ambassador of USA consider India as a functional anarchy. Former ambassador of USA considers India as a country of functional anarchy. As a country of functional anarchy. But the reaction to this, India reacted to this. India reacted to this with his own culture, that has been developed, with his own culture and civilization. During the time of COVID-19, India helped. During the time of COVID-19, India provided assistance to more than 90 countries. India provided assistance to more than 90 countries with HCQ medicine under Sanjeevani mission, and provided vaccines under Operation Maitri, under
ऑपरेशन मैत्री। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। ठीक है ना। सो लिखिए यहाँ पे, even when we talk about geopolitical level, former ambassador of USA consider India as a country of functional anarchy, but India reacted to this with its own culture and civilization. During the time of COVID-19, India provided assistance to more than 90 countries with HCQ medicine and under Sanjeevani mission and provided vaccines under Operation मैत्री। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, समय हो रहा है। मेरी जो आज इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास है टेररिज्म के लिए, वो क्लासेस जो है कल होगी। आई एम हैविंग सीवियर हेडेक, सो आई हैव टू मूव टू माय रूम, सो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर इट। द क्लासेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी दैट वाज बीइंग शेड्यूल्ड एट 9:30 विल बी कंडक्टेड टुमारो। थैंक यू, थैंक्स लॉट। सो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, आई नीड टू एंड द ऐसे को एंड करना है। चलिए, ओके। Perception, reflection, attitude affect the society in perception, reflection, attitude affects society in both the ways। आकाश जो है, आकाश शुड लर्न, आकाश शुड लर्न हाउ टू टॉक पोलाइटली, हाउ टू टॉक पोलाइटली, हाउ टू टॉक पोलाइटली and develop some patience and emotional intelligence and emotional intelligence in the society proper awareness should be developed so that in the society proper awareness should be developed so that perception, reflection are integrated in such a in such a way that communal harmony and sustainable development can be achieved. Sustainable development can be achieved. ठीक है, so this is the end of the essay. Okay. ओके आशीष जी, कोई बात नहीं। तो देखिए क्या लिखा है, परसेप्शन, रिफ्लेक्शन, एटीट्यूड अफेक्ट सोसाइटी इन बोथ द वेज। आकाश शुड लर्न हाउ टू टॉक पोलाइटली एंड डेवलप सम पेशेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस इन द सोसाइटी। प्रॉपर अवेयरनेस should be developed so that perception, reflection are integrated in such a way that communal harmony and sustainable development can be achieved. ठीक है, is it okay? Once it is noted, please do let me know so that I can end the session.
once it is noted, please do let me know so that I can end the session. Okay, done. So thanks a lot for your cooperation. फिर हमारी मुलाकात कल होगी. कल मेरी क्लासेस 7 से 8 करंट अफेयर की क्लासेस होगी, 8 से 9:30 एसी की क्लास होगी, 9:30 to 10:30 इंटरनल सिक्योरिटी की क्लासेस होगी. सो थैंक यू एवरीवन. जय हिंद, जय भारत.